Are you people able to see my screen? Yes, visible. Okay. Have you people dealt with customers who are already using Tally Prime on AWS? Or if some of you are new to this? So new. Okay, new. Okay. Anybody else? Sir, we are new, sir. Okay, okay, okay. So Tally Prime on AWS is basically we are providing Tally Prime on AWS platform. Okay, where the operating system is Linux, and we have a Wine emulator on which the Tally is running. Okay, so uh, for you to provide a plan to the customer, there are some things that we need to do before uh, providing the TP on AWS subscription to the customer. There are some things that we need to follow. For example, we will have to study a few things like system. What is the system configuration? What is the data size? The size of the Tally data. Okay, and currently, what is the Tally application overall memory utilization in current environment, and what is the customer usage pattern? Okay, for example, if a customer says he has 4 users, he wants to take a 4 user pack, okay, regular pro pack. So there are some things that we need to check before saying whether he can go for 4 user pack, or if his memory utilization is more, which plan will be suitable for him. For example, you'll have to see what is the system configuration that he has, okay, and the data size. And in Tally, you'll have to check when he's working on Tally, what is the memory utilization. Okay, so memory utilization is whether due to his data size, the memory utilization is more. So I'll just show you. I'll just open Tally. I'll just show you where to check the memory utilization. Just 1 second. Just open a different. So here I've opened the Tally, and now what we will do is we will check the memory utilization. I'm sorry, I'll have to start recording the session. So, so here, if you see, we'll have to see what is the memory utilization at the startup. Okay, I've started the application. What is the memory utilization? And next, we will have to check what is the memory utilization when all the users have logged in. For example, if he has 4 users, and after all the 4 users have logged in, you'll have to check what is the memory utilization. And when you at the startup, next thing is when they're operating on Tally, whether they're doing some entries or viewing some reports, what is the memory utilization? So this we will have to calculate. Okay, based on that, we'll have to suggest them the package. Okay, and customer usage pattern. Customer usage pattern in the sense, if he's opening multiple tallies, for example, in
If it's open multiple tallies, I'll just open one more company. So again, memory utilization will be more. So I've just opened one more, this one. So now I'll check the memory utilization. So if you go here, you can see the memory utilization is more after I opened two instances of Tally. So like this, you'll have to speak to the customer, inquire about how many Tally instances does he open. So we've had some customers where they've purchased AWS, and in a personal pack, they are opening two or three instances of Tally, and they'll report performance issue. So at that time, we'll have to suggest them that as their memory usage is more, so they'll not be able to open and work on multiple instances of Tally. So before, while suggesting, we should have all this in mind and then only suggest the plan. When we say 2 user, 4 user, it is not 2 users will work perfectly. It is that up to 2 users can work. Okay. So memory utilization, allocation and utilization of AWS environment. Okay. How the memory utilization works in AWS. Okay. So memory utilization is each VM. When you say each VM, the pack that we give, whether it is a one personal pack or one regular pack to customer, we will say 4 users, for example. So there, one VM is given to the customer. Okay. And with one VM, he will get 4 VCP, that is 4 virtual containers. Okay. 4 virtual computers. Okay, memory utilization happens in such a way that each VM is given 1 GB memory that is fixed. Okay, so automatically the VM will reserve 1 GB memory for each VM, and for each virtual computer it will fix 400 MB. Okay, so this is how memory is utilized in AWS. Next is Tally application overall memory utilization. Okay, as I showed you, we have three parts here. One is startup memory utilization, another is application memory utilization, and operational memory utilization. I will just show you in my AWS. I have logged into AWS. One second. So for people who are new to this, I will just show it to you. Just log out once. So you'll have to log into ssp.elcom.digital. So here I'll give my username, password, and my secure pin. So here, if you can see, this is a TPS performance pack. So I will connect to my virtual computer now, virtual machine. Okay. So this is how my virtual computer looks. Okay. सर एक Where we, क्वेश्चन था जी. हाँ sir, हेलो. बोलिए. हाँ.
सर जैसे ये सेटअप करना है, जैसे मान लो मेरे से क्लाइंट ने आज बोला कि मेरे को अभी क्लाउड पे सिस्टम ले जाना है, तो ये जो आपका ये वाला सेटअप है, ये कौन कर, मतलब हमारे को ये भी आप सिखाएंगे आज जी? नहीं नहीं सर, ये सेटअप नहीं है। जब आप प्रोविजन करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली आपको टैली प्राइम और ये आ जाएगा। ठीक है, ओके इट इज ऑलरेडी प्री एनेबल्ड। ओके, तो डाटा, अच्छा ठीक है। It is already enabled, sir. So ओके when सर, ठीक। you provision VM to a customer, and when he logs in, he will already see Tally Prime installed on that. Okay, अगर उनको Tally Prime server चाहिए तो what you can do is you can go here, settings, update Tally Prime. इधर आपको उनको कौन सा रिलीज चाहिए, ईयर यू हैव Tally Prime ओके server सभी रहेगा। इधर से आप उसको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और एक बात है, दिस इज ऑन ब्राउजर व्हाट आई एम शोइंग यू, देन वी विल हैव अ रैपर क्लाइंट आल्सो। सो उसके लिए क्या करना है आपको, तो डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं बाद में आपको। ओके, दिस इज हाउ योर वर्चुअल मशीन लुक्स। ओके, सो इधर हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। आई विल शो यू द टैली एप्लीकेशन ओवरऑल मेमोरी यूटिलाइजेशन हाउ इट लुक्स। सो आई गो टू हेल्प टास्क मैनेजर। बढ़िया है। So here you can see CPU usage is minimal and the mem सर आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, अभी टैली ओपन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं आपको, तो टैली ओपन कर देता हूं। आप देखिए 1.9 GB यूटिलाइज हो गया। सो दिस इज द स्टार्टअप मेमोरी। ओके, और स्टार्टअप और एप्लीकेशन मेमोरी दोनों मैंने कंपनी भी ओपन कर लिया है। सो अगेन दिस स्टार्टअप एंड एप्लीकेशन मेमोरी विल डिपेंड ऑन योर डेटा साइज सर। अगर आपका डेटा साइज बहुत बड़ा है, मास्टर्स ज्यादा है और ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज होगा। ठीक है, अभी मैं कुछ ये करता हूँ। सो आई जस्ट रन अ रिपोर्ट। सो उसके लिए अलग से आपको थोड़ा और ज्यादा पड़ेगा, हेलो ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। सर, मैंने पूछना था कि यहाँ पे जो वीएम साइज है वो 1.9 जीबी दिखा रहा है, पर सर एक्चुअल में जब हम पीसी में चेक करते हैं, जब टेलीप्राइम इंस्टॉल होता है तो उसमें कुछ एमबी यूज होती है, जैसे 350 एमबी यूज हो गए जब टेलीप्राइम को लोड कर लेते हैं कंपनी के साथ। हाँ तो इतना ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि जब ये क्लाउड में ये चल रहा है तो 1.9 जीबी कंज्यूम हो रहा है, और जब लोकल पीसी में चल रहा है तो सर 350 एमबी तक कंज्यूम हो रहा है? सर दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द, मैं वही बोल रहा हूँ, डेटा साइज आपका मास्टर्स कितना है, ट्रांजैक्शंस कितना है, वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, आपका भी ये कंपनी का डेटा साइज ज्यादा है इसीलिए ऐसा हाँ हो रहा हाँ हाँ हाँ। है। ओके सर, ओके। एंड सर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ईच वीएम विल यस, फिक्स 1 GB मेमोरी, सो उसके ऊपर लगेगा। उसके ऊपर एडिशनल लगता है सर। हाँ हाँ हाँ, उसके ओके, ऊपर एडिशनल लगता है। और जब ठीक आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो और थोड़ा ज्यादा होगा, और जब ऑपरेशंस करते हैं ना, जैसे एंट्री करते हैं या कुछ रिपोर्ट्स व्यू करते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। एंड सर, आपने वो 3 पॉइंट्स बताए थे, एक तो स्टार्टअप मेमोरी यूटिलाइजेशन बताया, एंड रिमेनिंग 2 क्या थे? एप्लीकेशन मेमोरी है, जी, और तीसरा? ऑपरेशंस मेमोरी है सर। ओके सर। और मेमोरी यूटिलाइजेशन हर वीएम को 1 GB फिक्स होगा, even without opening tally 1 GB memory will be utilized. ओके, एंड हर एक कंटेनर, जैसे 4 यूजर्स है तो 4 कंटेनर से एक कंटेनर को 400 MB फिक्स होगा।
Without doing anything, that will show as utilized. ठीक है सर? Yes, sir. Yeah. Or sir, we get many issues where customer wants to download and upload. So partners को पता नहीं रहता है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है. So उसके लिए मैं दिखा देता हूँ. So this is uploading and downloading files option. इसमें से आप डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं. So for example here I will say upload one file. So it will basically take me to my local desktop. ये मेरा लोकल डेस्कटॉप है. मैं एक फाइल को अपलोड करता हूँ. So what I will do is, one second, I want to upload it to my files, export alloc के अंदर मैं अपलोड करना चाहता हूँ. So अभी कौन सा फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड पे क्लिक कीजिए. So I will just select one file and say open. तो ये फाइल आ गया, इधर अपलोड हो गया है. तो उसका ये देखने के लिए अगर अपलोड हुआ है कि नहीं अपलोड हुआ है, ये नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए. ठीक है. सो ये नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि अपलोड हो रहा है. अगर बड़ा बड़ा बहुत बड़ा फाइल है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन में दिखाएगा आपको. सो ये दोनों ओपन करना है तो जल्दी हो जाएगा आपको. ये स्क्रीन और नोटिफिकेशन स्क्रीन दोनों ये कर लीजिए. सो नाउ आई विल शो यू one file. I'll download one file and show you how it happens. So you go and select that file and click on download. So automatically वो फाइल आपको लोकल फोल्डर में डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है सर? हेलो, am I audible? Yes, sir. Can you repeat the download part? You are audible double times. Okay. So this is upload and download. So then we have here display resolution. अगर वो बोलते हैं कि वो फॉन्ट साइज बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, तो इधर आके आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन में अडॉप्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. We'll go back to that PPT. So top queries, and I want you to people to come out with queries. If you have any queries regarding AWS, please come forward and you can ask the queries. Okay. So top queries: installation errors due to VC++ and .NET, Windows certification updation, Windows service pack is not updated. Okay. So this will happen when I'll tell you. When we are installing this virtual computer. Okay. So when we are installing the virtual computer, so we might get this VC++ or .NET download error, Windows certification updation, Windows 7 service pack. So what you'll have to do is you'll have to go to elcom.com. One second.
Go to help. So click on this. So based on the error that you get, you can see the files that you have to download. So update root Windows root certification program. And for this particular error, you can see what you have to update. Here in Windows 7 or Windows 8.1, we will get this issue while installing the virtual computer application. So you'll have to go to elcom.digital help and this particular option. सर सॉरी अगेन बताएंगे थोड़ा सा एलकॉम के बाद कहाँ गए ये कहाँ से आई ऑप्शन? एक मिनट सर मैं दिखाता हूँ. थैंक यू. Download. So मैं पहले से दिखाता हूँ. So when we are installing the client, see this is on browser. Okay, so this AWS I've opened it in browser. So there is one more way of working on that on AWS. So where you have to download this client. Okay, sir, I'll come back to your query, how to go to Elcom. Okay, sir. Okay, so here supports 7 or later 32, 64 GB, 64-bit OS with Windows.NET. Okay, so what we, even though it is supported on Windows 7, we ask the customer if they are purchasing a new machine or if they are upgrading their OS, we'll ask them to come to Windows 10 or Windows 11. Even though we support Windows 7 and 8.1, if they're okay, we can ask them to come to Windows 10 or Windows 11. If they're using Windows 7 only, so then we'll have to, we might get some these issues what I showed you. VC.NET download, Windows certificate updation, and Windows 7 service pack. Okay, so at that time, what we have to do is we have to install service pack that is available in Elcom. So here we will download this. We have a full download the full installer. So this is that application. It's called as DCV or wrapper client, you can call it. So it is already installed. So once you install it, it will look like this. So you can log in from here also. So I'll just log out from there. 1 second. I will just say log out, disconnect from here. And I will log in from here. So this is how it will look in a nice DCV. We call it as DCV or wrapper client. Okay, any doubts here?
सर एक बार और दिखा देंगे आपने कहाँ से डाउनलोड किया ये? हाँ, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। जब आप ब्राउजर में लॉग इन करते हैं ना, जी 1 मिनट, फर्स्ट टाइम आप किसी ने मुझसे पूछा था उसका कुछ सेटअप करना है, क्या करना है करके, तो सेटअप तो यही है। सो जब आप टैली प्राइम ऑन AWS प्रोविजन करते हैं तो आप लॉग इन करते हैं तो ये स्क्रीन आएगा आपको, ठीक है। सो ये स्क्रीन में नीचे डाउनलोड क्लाइंट करके एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, installation setup exe will get downloaded. So when I double click on that, this application will get installed. So when I log into that, you get the same experience as in the browser. Okay. Sir, I hope I've answered your question. yes yes Okay. Vijay, there's a question in the chat. हेलो हाँ हाँ, ब्राउजर पे कैलकुलेटर बार कैसे देख सकते हैं? ब्राउजर पे सर शॉर्टकट कीज इधर काम नहीं करता ब्राउजर में, वो नोटेड इश्यू है, काम हो रहा है उसके ऊपर। और एक्सेल टू टैली इंटीग्रेशन करना है तो Excel to Tally integration, हाँ you want to import this one? यस यस सर इसमें आपको ये मिल जाएगा सर, इधर देखिए, इधर डी फोल्डर करके है, तो इधर आप रख के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो श्योर सेम सर है। हाँ हाँ सर, ये सभी फीचर्स आपको सेम मिलेगा। इधर डी ड्राइव करके है, इसमें आपको हाँ। रहेगा माई एप्लीकेशन। इसमें आपको अगर टैली प्राइम एडिट लॉग है तो एडिट लॉग भी मिलेगा, टैली प्राइम भी मिलेगा, अगर सर्वर है तो सर्वर भी मिलेगा। ओके, सो यू हैव But टू गो टू। since हाँ this is Linux, हाँ how come Excel drivers will work for import? सर, इधर लिबर ऑफिस काम करेगा सर। LibreOffice extension file is different. Excel file extension is different. Tally will work on only XLS file, right? Anything Exactly. is possible to you show me on anyone trial on Excel import. It is, I think, is not working in AWS. Yeah, exactly. That was my Sir, in AWS, LibreOffice will support. LibreOffice is also saved as .xls and हाँ सुजिन, In AWS, LibreOffice is supported. yes, LibreOffice is supported, but can we import from Excel to Tally? Can we use the Excel import feature? Yes, sir, you can use that. Okay, we'll check. so as I showed you how to upload and download, you can use the same option here. So next issue that we receive is printer not listed in the list of printers. So we'll have to check if the printers are installed properly in the local machine. Okay.
So here, if you go to printer, so it will list you all the printers. All the printers that are installed, you can see from here. And in case here the printer that you have installed is not listing, what you can do is you can check the root memory once. Just go to F1. One second. Sorry. F1 about. Press F5 detailed. So here you have something called as C drive, D drive. So here, if in case you're getting an issue where printer is not getting listed, you can check whether if the C drive, if there is any free space or not. So if there is no free space, what you can do is you can restart the virtual machine once and your issue will get resolved. So for restarting the virtual machine, what you have to do is so go to this action button, restart and virtual office. So before doing this operation, you'll have to ask all the users to log off from Tally. Okay. So printer not listing issue should get resolved once you restart the virtual office. Provided that the C drive, there is no space. Okay, then you will have connectivity related issues and frequent disconnections. Here, what we are telling is idle timeout. See, if you're not using the system for 45 minutes, so what will happen is automatically it will log out from your system. And then major, pardon? This option available in a virtual icon, the desktop icon option also is Yes. there, only browser. Yes. No. Virtual DCV also, sir. If you're not working for more than 45 minutes, if it is completely idle, it will log out. Okay. And then we have performance issues where, say, for example, customer will call you and inform you that when they are working, suddenly the system is shutting down or suddenly Tally is freezing. So what you can do is, as I showed you earlier, first thing what you'll have to see is what is the memory utilization that is happening. If it's a personal pack and if it is freezing or if it is shutting down, so you'll have to see if it's opened multiple instances of Tally and working. So as I showed you, when you open single Tally, it will take up to 2 GB. So if he's opening multiple instances of Tally, or if he's opening multiple Excel files, so that will also eat into his memory. So you'll have to educate the customer, or you'll have to ask the customer to go for a upgrade his plan, go for a better plan. Okay, then we have sync from local apps. For example, we are currently supporting some apps, third-party apps like CredFlow, BizAnalyst. Okay, and so whenever there is an issue with syncing, what you can do is you can. There are some steps that we follow. So currently it is come down a lot. So even if you're getting this issue, what you can do is you can just restart the virtual machine once, or virtual office once and check it out. Okay, or else
you can call us. We'll help you out, sir. How to set up the process of configuring business analyst or credit flow? Okay. Configuration, we have not covered it in our PPT. Do you have any pending installation or something like that, sir? No, we have orders. Okay. Nothing is pending right now, but we need to know the procedure. So for that, what you have to do is you'll have to take the port number. I'm sorry. 1 second. I'll just show you. Yeah, sure. So you'll have to enable the ODBC and the port number, and the same thing has to be given in Biz Analyst also. Okay, but how do you connect the business analyst desktop with this? Yeah, it will not work in the browser. It will only work in the DCV. Okay, it'll work on DC. Yeah, 1 second. I'll just show it to you. Sure. Okay, for that, first what you'll have to do is you'll have to go to open the browser. 1 second. So first what you'll have to do is setting, manage users. So here you'll have to enable allow sync local application. So you'll have to say yes. Okay. So then you have to go to settings, advanced settings, sync with local application. You have to say yes. Okay. So these are the two settings that you do here. So once you do here, Okay. so you'll have to give the ODBC, say ODBC yes, and port number. The port number has to be the same port number what you have given in Biz Analyst. So I'll just log out from here just a second. Oh, I don't have a. Hello, sir. Yeah. Actually, one customer using Business Analyst with AWS for user enable this first user, but that first user last 2 days is not come to the office, so the Business Analyst is not sync. Every time want to change the user like this, a problem is there. Why not you give the option is all users for the sync option? Why you give the option is only one user? Why? Sometimes she is not come to the office, facing the sync issues is there. What will do? Sir, currently it is enabled only for one user. We'll take it as a requirement. We'll check with the PM team, sir. Okay. And the person who asked me for enabling Biz Analyst, sir, give us a call. We will just show it to you with one user.
Okay, it Sure. is a simple process. So for the other Yeah. customers, you can do it, sir. So Okay, currently, sure. I don't have the biz analyst here to show it to you. Fine. But the setup, whatever I showed you, it is the same setup that we have. Is it available on help? Help, I think biz analyst is not available, sir. You Oh, give us a fine. call, we'll show it to you, sir. It is a simple Sure. process. Done. Okay. Hello. Yeah. Sir, actually I want to ask that क्या हम थर्ड पार्टी एप्स चला सकते हैं क्लाउड में या ओनली जो प्री इंस्टॉल है जैसे टेलीप्राइम वही रन कर सकते हैं? Third party apps in the sense? सर फॉर एग्जांपल ब्राउजर, क्या मैं ब्राउजर चला सकता हूँ क्लाउड में? ब्राउजर चला सकते हैं सर, मगर you will not be able to install any application here on AWS. ओके, तो सर फिर बीज एनालिस्ट कैसे कनेक्ट हो पाएगा? Sir, उसको तो लोकल मशीन पे रहना पड़ेगा उसके नहीं कनेक्टर को। we have created a tunnel through which biz analyst will talk through ODBC. हेलो Yeah. सर डिजिटल सिग्नेचर होता है AWS पे? अभी फिलहाल नोटेड इश्यू है मैडम, काम चल रहा है उसके ऊपर। ओके, कब तक आएगा? वो टाइमलाइंस हमको पता नहीं है अभी। So once it comes out, we will inform all the partners. ओके सर, इसके लिए ऑप्शन है क्या कोई? नहीं मैडम, अभी तो नहीं है। अल्टरनेट समझो आपको एक्सपोर्ट करके वो डिजिटल सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट करके मतलब कैसा? वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके बाद में डिजिटल सिग्नेचर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फिर बाद में वो मशीन पे करना पड़ेगा। आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके वो लोकल पीसी पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से डिजिटल सिग्नेचर आप कर सकते हो। तो नई कंपनी तो स्टार्टिंग से ही पकड़ेगा अपना सीरियल नंबर। Any other queries here? हेलो Sir? हेलो Yeah. अभी कुछ ऐसा एनी प्लान है कुछ मेमोरी अपग्रेडेशन के लिए कुछ एडिशनल या तो स्पेस हार्ड डिस्क स्पेस के लिए? सर अभी फिलहाल स्टॉप किया गया है एडिशनल रैम के लिए और स्पेस के लिए। So once we roll back that or we come up with a new plan, we'll update you, sir. Okay. So currently, if they want to upgrade, they'll have to upgrade the plan itself. Okay. Right. ठीक। I have a query. Yeah. See, when the customer forgets to do the subscription, assume that today is the last day of this subscription. So even if it is for a day, the VM will get deprovisioned. Yeah, deprovisioned. So at least there should be an update for there should be a buffer of 3 days where you're blocking the access, but when he renews it, the same VM will be up. Sir, actually, we give a updation here on the page when they log in. We will say when it is expiring in few days. So on such and such a date, we give it in red so that it is visible to the customers. See, there are few customers who are basically using single users. They log in they don't log in frequently. They may be using 10 days once or fortnightly once. Okay. So in these scenarios, so they don't get to know. No, they'll be receiving mails, sir, actually, from Welcome. Yes, sir. Even in the worst case, if they forget it, so they get deprovision. At least there should be a buffer of 3 days. You block the access. We don't deny it. But at least the same VM should be up. In fact, AWS has these options. But Tally on AWS doesn't provide this. Okay. But again, sir, when see if the customer is not logging in frequently or once in a while he logs in, so 3 days also he might not log in, where we give a alarming warning or something warning while logging in. See, but again, when the users see, this is fine in the case of single user because normally we get the VM, we deploy it. But in the case of multi-user, it might be difficult.
Okay. We'll Because see, SQL sir. configurations would have saved. Again, the support issue will be time consuming. We'll see, sir, what best we can do for this. Sir. Yeah. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವ ನರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದು AWS ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ he is asking about copy paste from narration from Excel to narration. See, either you click on this. Okay, go to site settings. So here you have copy paste pop up. So clipboard. Okay. So clipboard you have to enable. So you have all the options here. You have to enable it here. ಇದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಲೋ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Okay, these are some of the non-product queries. Change of owner ID, upgrade, downgrade of plan, upgrade related issues, lead related issues, order related issues. So you can get in touch with us where the customer has purchased from A partner A 1 year ago. Now he wants to change it to partner B. And if he wants to downgrade or upgrade of plan, upgrade related issues, if he has some issues. And if you people have some lead related issues or order related issues, you can get in touch with us. We'll see to that the issue gets resolved. So as I showed you earlier, in case of where the system OS being Windows 7 or Windows 8.1, so you have to ensure Service Pack 1 is used and .NET 4.6 is installed. Okay, so I'll just show you the LCOM page once again. So I'll go to, somebody asked me how to go to that help file. Go to elcom.digital. So click on help. So somebody asked me, how do I sync local apps? We have that one also here. Okay. Yeah. So here you can see it is in detail. So you can go through this, sir. If you still have any issues, we'll help you out. Sure. Okay. सर एक क्वेश्चन था जी. हाँ सर बोलिए. जैसे मान लो हम किसी क्लाइंट को क्लाउड सेल आउट कर रहे हैं, उस टाइम अगर हमारे को कोई हेल्प चाहिए हो तो डायरेक्ट टैली केयर टीम पे मतलब कॉल करके हम वहां से हेल्प ले सकते हैं. Sir, if it is related to technical, you can call us. We have our dedicated number 080 सॉरी 6810. एक सेकंड सर. लिख लीजिए. 6810 080 6810 6810 3766. 3766. टैली क्लाउड के लिए अगर मान लो कोई हमने हेल्प लेनी हो तो यहाँ पे मिलेगा. हाँ सर, अगर कमर्शियल रिलेटेड है तो आप नहीं टेक्निकल सर. हाँ हाँ, टेक्निकल हमसे बात कर सकते हैं. ये डेडिकेटेड नंबर है पार्टनर्स के लिए. 080 जी सर. 6810
हाँ 3766 बिल बनाना है फटाफट। ओके सर। किसी और को बोल दो। Put it on chat, sir. Yeah, I'll put it on chat. So this is the option. टैली का बिल मतलब Installation ledger बिल बनाओ issues. फटाफट टैली के उसमें अपने से। Yeah, one Major second, amount Vijay. 1 second. Can I request all to go on mute, please? Please mute yourself. सॉरी सर। Yeah. चैट पे अभी डाला है सुजिन सर ने। हेलो या सर, वो प्रिंट का फॉर्मेट भी चेंज होता है। वो टीसीपी में हम ऐड करते हैं ना, तो एडब्ल्यूएस में टैली डाला तो प्रिंट फॉर्मेट चेंज होता है। ओके, सो तो आप इसके कॉल लिए कर लीजिए, वी विल चेक सर, नो प्रॉब्लम। Yeah, even we हाँ have हाँ noted this issue. ओके ओके नहीं, कॉल किया तो उन्होंने क्या बोला, वो डेवलपर टीम से बात कीजिए और उधर से आप R&D करके करिए ऐसा। वो टीडी टीम से बात किया था क्या आपने? हाँ, एक बार सपोर्ट को कॉल किया था क्योंकि पूरा चेंज हो गया था वो फॉर्मेट। FI साइज ओके का प्रिंट था, चेक का प्रिंट था, अपना लिफाफे का प्रिंट था। ओके ओके हाँ और टीडी टीम से बात किया था सर क्या आपने? सपोर्ट टीम से बात किया तो उन्होंने बोला कि डेवलपर आपका लोकल मतलब हमारा ऑफिस का डेवलपर है ना, उनसे बात करके उसमें करेक्शन करिए। फिर उनसे करेक्शन करके मैंने डाला। फिर नहीं तो डिफॉल्ट मतलब जो लोकल टेली में जो चलता है ना, वो उधर AWS में नहीं चलता, प्रिंट फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। सर एक बार टिकट नंबर पिंग कर लीजिए, मैं चेक करता हूँ। टिकट नंबर हाँ है क्या आपके पास? नहीं, अभी 15 दिन हो गए वो, अभी ओके देखना पड़ेगा। अभी हमने वो करेक्शन करके ले लिया फिर। ओके ओके हाँ अभी चालू है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी 12 यूजर का चालू है AWS। ओके हाँ चल। so these are basically for your installation issues. हेलो हाँ सर, सर, ये एक क्वेश्चन था कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कहाँ से एक्सेस मिलेगा मुझे आफ्टर दिस वेबिनार? सर welcome.digital। ओके सर, आप उसका लिंक पेश कर सकते हैं चैट पर? हाँ हाँ मैं करता हूँ सर। सर इस लिंक को ओपन करके कहाँ पर जाना है रिकॉर्डिंग्स के लिए? एक मिनट सर, मैं दिखाता हूँ। जी जी सर, यहाँ पे आ गए। हेल्प में आइए, जी सिंक विथ लोकल एप्स इधर है, ठीक है सर। नहीं सर, मैं इसका नहीं पूछ रहा, ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सेशन, 1 घंटे 12 मिनट का हो गया जो, हाँ हाँ मैं इसका चैट एक्सेस में कहाँ मिलेगा सर? मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। नहीं, ये रिकॉर्डिंग सेशन के बाद मैं भेज दूंगा। जी, इट्स बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, आई विल शेयर इट विद योर, आपका ईमेल आईडी में मिल जाएगा, ठीक है। विजय, वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन नाउ, या वी Okay, कैन कंटिन्यू, आई थिंक, या। Okay, while working on Tally Prime, system freezes are not does not allow to perform any action. अगर ये फ्रीज का प्रॉब्लम है तो आप डिस्प्ले ड्राइवर्स एक बार रीइंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं विद द लेटेस्ट रिलीज। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट वी गेट। एक है इंस्टॉलेशन इश्यू, एक है वो डीसीवी फ्रीज हो रहा है करके थोड़ा कस्टमर्स बोलते हैं, तो एक बार डिस्प्ले ड्राइवर्स रीइंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं।
then we will have some connectivity issues. So unable to connect, network error करके आता है. Then what you can do is you can ping ssp.elcom.digital space -t to check the continuous ping. Okay, or sometimes you'll get VM connecting ही दिखा रहेगा. So connect करके नहीं दिखाएगा, connecting करके दिखाएगा. So then what you can do is you can ping the ssp.elcom.digital space -t, where it will show you how much time is it taking to ping that particular site. And if you get a request timed out, then you can, what you can do is you can enable this in your firewall and antivirus. Okay. Okay, next error is VM status shows error while connecting from virtual computer. Okay, for example, if you have a 2-pack user or 4-pack user, one particular VM, it is showing as error. One particular user is not able to log in. What you can do is, as I showed you earlier, you have to log in from owner ID, go to that so go here, restart, and restart the virtual office. Okay. Virtual office takes time to start. So you can again try that. Still, if you're getting issues, you can get in touch with us. Adding to Vijay, please ensure that all the users are logged out before restarting the virtual office. Yes, my bad. So make sure that all the Tally users are logged out from Tally. If their VMs are open, it is no issue, but their Tally should be closed. Performance issues while entering transaction, accessing report in Tally from AWS. Okay, reason might be due to huge data. Okay, for example, if they have purchased personal pack, this is for example, nobody will do that. If they have purchased personal pack, they will get data size up to 5 GB. And if their Tally data size itself is around 4 GB or more than 5 GB, it will not at all work. So we have to make sure that we do all this analysis before suggesting the customer what plan they should go. It is not purely not based on the number of users that he wants. It is the number of multiple things. That is, what is the system configuration, what is the data size of the Tally company, and how is the customer using, whether if he's using multiple instances, if he's opening multiple instances of Tally, and what is the memory utilization. So all these things we have to keep in mind while proposing the plan to the customer. So here also, performance issues can come if they are opening multiple instances of Tally, and if their data size is huge. Okay, and the RAM that is provisioned to them is less. Okay, if it is a 4-user pack, they will get 8 GB RAM. And if all the 4 users open multiple instances of Tally, of course it will crash, because the memory utilization will be more than 95-100%. Okay, so what they are telling is this may be due to huge data size versus the VM provisioned. Okay, so for that, what you have to do is you have to check the memory consumption of Tally Prime application. So how do you do it? Go to Start, Virtual Computer, select Troubleshooting, Task Manager.
and see the memory consumption and CPU usage. If the memory consumption is more than allocated memory, you have to upgrade the plan from existing to a new plan. Okay. Only if it is, if the configuration is low for the data size and usage. Any doubts here? Because we get many issues where we have seen customer have opened multiple instances of Tally, and we educate them, and when they start opening only a single instance of Tally, their problem is getting resolved. Any questions? I'll take it now. इंटरनेट स्पीड रिक्वायर कितना है Sir, अभी? minimum we ask is 10 Mbps, sir. तो अभी 100 Mbps प्लान है, 12 यूजर है। हाँ, काम करेगा, आपको नेटवर्क इशू कुछ नहीं आएगा। और अपना 12 यूजर और सर सॉरी 16 यूजर सेम मशीन है क्या? Sir, any OTP facility available? Sir, we already have your Tallynet password and secure PIN. So above this, what is the requirement here, sir? Why does he require OTP? Somebody always tell me the resource will be working on in Sundays also. Okay. Okay, but I will know. My Okay, company they is will. using. That's why you're asking every time is the OTP in my phone. Then I know. My Sir, for account them, will be what present. they can do is, if they can go to reports and Okay. see the event log. So Okay. here they will come to know. So who was logged in, who was logged out, and when. You Right can now, show this to. see this report only. Ah. But you can block the OTP also. You wanted. That is currently not available, sir. Available. Okay. Future सर में एक छोटा क्वेश्चन था जी आपसे। हाँ सर, बोलिए। सर आपने एक चीज बताई थी कि फाइल अपलोड, जैसे मान लीजिए डाटा हमने कस्टमर का डाटा अपलोड करना है, तो वो भी मतलब जब हम लेंगे तो अपने आप कर देंगे या तो हमारे को ही करना पड़ेगा? वो थोड़ा सा अगर। सर फर्स्ट टाइम आपको ब्लैंक मिलेगा। आपको जब आप फर्स्ट टाइम प्रोविजन करते हैं ना, तब आपको ब्लैंक मिलेगा। So what you have to do is you will have to upload the data. Upload the data. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वैसे ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। One second. So you'll have to come here. You'll have to always upload the data in shared folder, sir. Shared data. Place it here. ओके। और सर इसमें से बैकअप ले, अगर कस्टमर चाहता है कि मेरे को अपने पीसी के ऊपर बैकअप लेना है तो? सर क्या होता है, जब भी आप सुबह लॉगिन करते हैं ना, तो वो जब VM स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली बैकअप होता है। तो उसका मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, सुबह एक बैकअप हो जाएगा आपको। ठीक है। उसके ऊपर आपको बैकअप चाहिए तो आप इधर बैकअप नाउ करके कर सकते हैं। नहीं, मतलब ये तो क्लाउड पे ही होगा ना, मेरे सिस्टम पे तो नहीं होगा, लोकल मशीन पे? इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर। हाँ, ये वही बैकअप को, ये बैकअप को डाउनलोड बैकअप कीजिए। एक और स्क्रीन ओपन होगा, इसमें आप एक पासवर्ड रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शेयर डेटा का जो भी है, वो पासवर्ड आप कॉपी कर लीजिए
और इधर आप डाउनलोड कीजिए। सो डाउनलोड आपको इधर हो जाएगा। वो ये तो थोड़ा बहुत बहुत बड़ा है। सो ठीक है, जब ठीक आप है। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड डालना पड़ेगा शायद। ये जिप फाइल जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, ये पासवर्ड ठीक है, पूछेगा, ये पासवर्ड उधर डालना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे ठीक है कैन सर। ओपन सर इट। एक आपसे एक मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। जैसे मान लो क्लाइंट ने हमारे से बोला कि मेरे को क्लाउड चाहिए है, तो हमने मतलब जैसे भी ऑर्डर वगैरह डाला, और ये अपने आप सेटअप जो ssp.lcom है, ये अपने आप सेटअप करके अपने आप दे देंगे हमारे को यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ सर। अगर आप 4 यूजर का मांगा तो वो हमारे को 4 यूजर का सेटअप बना के दे देंगे। हाँ हाँ। और कितना टाइम लगता है सर इसको? जैसे मान लो हमने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उसके बाद 1 दिन में आपको हो जाएगा सर। ओके। और Sir, इधर one आप more देख doubt. हाँ Sir, I can one partner, then I can change the other partner. हाँ I can till wait in expiry date. Any other related? सर, उसके लिए आपको बीएम से बात करना पड़ेगा सर। Okay. सो आपको ये सेटअप मिल जाएगा। सिर्फ आपको वो लोकल मशीन से डेटा इधर अपलोड करके इधर सेटअप करना है बस, टैली में। ठीक है सर, थैंक यू। और इधर आपको यूसेज रिपोर्ट्स मिलेगा। तो अभी तो जी यूसेज सर। रिपोर्ट्स कुछ ये नहीं है, क्योंकि दे कैन यूज इट 24/7। अर्लियर तो 312 आवर्स ही मिलता था, तो उसमें उनको देखने का जरूरत था। अभी तो यूसेज रिपोर्ट्स, इवेंट लॉग अभी भी हेल्पफुल है, क्योंकि यू कैन सी किसने लॉग इन किया था, किसने लॉग ऑफ किया था, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है और you have manage users here, you can create users here, you can delete the users from here, and हर एक यूजर को आप क्या राइट्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और फोल्डर एक्सेस वगैरह भी इधर से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है। लोकल ऐप सिंक भी कर सकते हैं। देन आपको मैनेज शटडाउन शेड्यूल रहेगा। ये इसलिए है कि एवरीडे आपको 7:30 को एक बार, 9 o'clock को एक बार शटडाउन रहेगा। यू कैन डिलीट दिस इफ यू डोंट वांट, और यू कैन एडिट दिस। मगर आपको 2 मैंडेटरी शटडाउन आपको हमेशा होगा, 12:30 को एक बार रात में, और 3 बजे। ठीक है। ओके। इधर एक ऑप्शन है स्किप शटडाउन करके, यू कैन स्किप दिस शटडाउन फॉर 48 आवर्स। 2 दिन तक आपको कुछ कंटिन्यूस काम है, बीच में शटडाउन नहीं होना है, तो इधर आके आप यू कैन स्किप द शटडाउन। ठीक है सर, थैंक यू जी। Anybody else has any questions? हेलो हाँ बोलिए सर। हाँ हेलो सर, वो 12 यूजर और 16 यूजर में सेम ही मशीन है क्या? मतलब स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर वगैरह? 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इससे स्पीड का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? सर मैं बोला ना, यू शुड नॉट गो ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। हमेशा आपको यू हैव टू सी कस्टमर को कितना चाहिए करके। नहीं, अभी मैंने प्लान चेक किया ना, प्लान में 16 और 12 यूजर के लिए सेम ही मशीन है। 1 मिनट सर।
हाँ सेम पैक है सर। एंड आप सभी को ये चेंजेस के रेट्स के बारे में पता है ना? सिंगल यूजर के लिए कितना है, 2 यूजर के लिए कितना है, 4, 6 और टीपीएस हाँ यूजर्स के वो लिए तो कितना है। है? हाँ हाँ सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए अभी हम मतलब जो भी कोई पार्टनर है वो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है या अभी भी किसी और के थ्रू ही करना है? सर that only your BM can answer sir. ओके ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Hello, sir. हाँ बोलिए मैडम। Sir, you said that frequent disconnection occurs whether tally is not used for 45 minutes. But one of my customer facing that problem, 2 to 3 minutes it will automatically close. What is the reason behind this and how to resolve this? Madam, what you have to do is, what is the error that is getting while it is shutting down? So that you'll have to check. If it is request timed out or timed out error, then it might be network error. Is network there is some latency. Because of that, it might be getting shut down. Because 2 to 3 minutes, it will not shut down. It should not shut down. Only after 45 minutes, if they are not done anything, then only it will shut down. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Any other questions? No, sir. If there are no other questions, we'll wrap up. Okay, sir. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, well, thank you, Vijay. Thank you all. If you have any Thank you, further Krishna. questions, you can always drop a mail to us and we will get it addressed. Right. And the separate number, hope everybody have noted down. It's a direct number to AWS team. If you use that number, then your call will directly get connected to AWS and TPS team. Yeah, thank you, Vijay. I think we are done. Yeah, we can. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sujin. Thank you, Krishna. Thank you. Thank you all.